हेलो स्टूडेंट्स ऑन द चैनल टॉक मैथ्स। मैं सर एक बार फिर आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस एंड यूजिंग दीज एलिमेंट्री ऑपरेशंस हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है हमारे पास देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, 3 corresponding to rows and 3 along the columns. So first one is to interchange any two rows or columns of a matrix. Symbolically we write Ri interchange Rj, or when you are interchanging columns Ci interchange Cj. Let us explain it with the help of one example. Say this is the matrix and I want to interchange R1 with R3. Row 1 to be interchanged by row 3. So the matrix then takes the form 3, 7, 4, 2, 5, 3, 1, 2, minus 1. Similarly, we can interchange two columns. Next is to multiply to each element of any row or column by some non-zero constant. Like Ri is multiplied by k. It means each element of ith row is multiplied by the constant. Or similarly for Ci. Now for the same matrix, suppose I want to write C2 as 5C2. It means I am going to multiply elements of second column by 5. So the matrix takes the form, first column we will write as it is, second column each element will be multiplied by 5. Similarly, we can multiply each element of any row by some constant. Like I want to multiply second row with 1 by 3. Then the matrix will take the form 1, 2, minus 1, first row as it is, each element of second row to be multiplied by 3. 1 by 3, sorry, 2 by 3, 5 by 3, 3 by 3, that is 1, 3, 7, 4. Then third elementary operation, to every element of any row or column, elements of any other row or column can be added by multiplying them with a constant. Ci can be written as Ci plus k times Cj. This better can be understood by taking an example. देखिए मैं एक example ले रहा हूँ. Suppose I want to write R1 as the elements of row 1. मैं करना चाहता हूँ R1 plus 3R2. It means I want to add to elements of first row elements of second row by multiplying them with 3. So the matrix will take the form first row elements to be written first plus 3 times second. It means 1 plus 2 into 3. 1 plus 2 multiply 3. Second element will be 2 plus 3 times 5. Third will be minus 1 plus 3 times 3. Then the rest of the rows as it is. So it takes the form 7, 17, 8, 2, 5, 3, 3, 7, 4. Similarly, we can write for the columns. Suppose I want to take second column as second column plus 4 times third column. So that can be written as C2 plus 4C3. And elements of third column, each element will be multiplied by 4 and will be added to the elements of second column. These 3 elementary operations are to be kept in mind and we will use these elementary operations to find A inverse.
अब ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है, पहले एक बार उसका कंसेप्ट समझ लें। देखिए मैं स्पेसिफिकली कोई तो एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज ए इज एंड मैट्रिक्स बी इज, I have taken these two examples, multiply these two, 2, 5, 1, 3, multiply 3 minus 5 minus 1, 2. So when you multiply, it is 2, 3 is a 6 minus 5, 1, minus 10 plus 10, 0, 3 minus 3, 0, minus 5 plus 6, 1. That is an identity matrix. Product of two matrices A and B gives you an identity matrix. A is the matrix, B is another matrix. When you are multiplying A into B, that is an identity matrix. It means B is A inverse. When we were studying the properties, about the properties of matrices, तब हमने ये देखा था कि A into A inverse is identity matrix. Identity matrix just like जो नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं 1 की तरह कंसीडर करें। 1 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर मिलता है। सिमिलरली व्हेन यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स यू गेट द सेम मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस गिव्स यू आइडेंटिटी, इट मींस B is A inverse, right? Now we will find this A inverse using elementary operations. Elementary operations दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर कहा जाता है देन सपोज क्वेश्चन इज दिस, हमसे कहा गया है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री row transformation. If it is said that using elementary row transformation, then we will use row transformation. If it is said that column transformation, then we will go by column transformation. If it is not mentioned, only question is find A inverse using elementary operations, then we can go by row or column, that is up to us. Now for row transformation, we will begin with A equal to IA. This is the process. We begin with A equal to IA. देखिए हम जानते हैं I into A is A. I into A क्या होता है? A. अब इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। अभी जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताए थे वो इस तरह से लगाएंगे so that this A becomes identity matrix and right hand side it becomes, when left hand side is identity, it right hand side definitely it will be the product of two matrices such that one is inverse of other, A inverse into A. So we begin with A equal to IA, 2, 5, 1, 3 equal to 1, 0, 0, 1 into A. ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखिए ये है 2, 5, ये है 1, 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज आइडेंटिटी, ऐसी मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ 1, 0, 0, 1। यहाँ पर 1 कैसे आ सकता है? इफ ईदर आई सब्ट्रैक्ट सेकेंड रो फ्रॉम फर्स्ट, तो 2 minus 1 वी विल गेट 1। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, वी कैन इंटरचेंज दीज टू रोज, सो R1 इंटरचेंज R2, दिस इज आवर फर्स्ट ऑपरेशन। R1 interchange R2, in place of R1 take R2, second row, and first row becomes second. Same operation to be operated on other side, so it is 0, 1, 1, 0. Now this is 1. Our next step is make it 0. This can be made 0, in place of 2 there must be 0. तो ये 0 कैसे हो सकता है भाई? 2 की जगह 0 कैसे आ सकता है? हमें पता है कि 2 minus 2 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं R2 as R2 minus twice of R1, that is 1, 3. 2 minus 2 into 1, 5 minus 2 into 3,
5 minus 6, that is minus 1. Same on other side, 1 minus 2 into 0, 0 minus 2. Now this is 1, this is 0. Now this must be 1. The process will remain like this. पहले हम इसको 1 करें, फिर उस लाइन में जितने भी हैं कॉलम में उन सबको 0 करें. इफ इट इज 3x3 मैट्रिक्स सपोज, तो हमें पहले इसको क्या करना है 1. मैं साथ में 3x3 का भी एक बता देता हूं तरीका. पहले इसको 1, then these two zeros. Next step will be 1, then these two 0. Next will be 1, then these two 0. ये प्रोसेस हमें तैयार रखना है. इसी तरीके से चलेंगे तभी सही रहेगा. पहले ये 1, फिर उसी कॉलम के दोनों 0. ऐसे नहीं यहाँ 1 फिर हमें कहीं इजी दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ 1 कर दें, फिर इधर 0 कर दें. रैंडम नहीं, ओनली this 1, then these two 0, then this 1, these two 0, then this 1, these two 0. और ये 1 0 0 ये जो एलिमेंट हमको इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है इसमें यूजिंग these 3 ऑपरेशंस जो बताए हैं अभी. अब ये 1 हो गया. अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, इसको 1 करना. तो दिस कैन बी मेड 1 by writing R2 as minus 1 into R2. R2 as minus 1 R2. So 1 3 0 1. Same right hand side, 0 1 minus 1 2. Correct? Then this is 1, this is 1, this is 0. Now it is to be made 0. So how can this be 0? By writing 3 का जगह 0 कैसे आ सकता है? 3 minus 3 0 होता है. So 3 minus 3 into this. It means R1 minus 3R2. ठीक है. R1 minus 3R2. 1 minus 3 into 0. 3 minus 3 into 1. 0 1. Same right hand side. 0 minus multiply with minus 3 plus 3. That is 3. 1 minus 6, that is minus 5. And this is minus 1 2 into A. So left hand side it has become identity. Then we will write, we know that I equal to A inverse into A, which implies that A inverse equal to 3 minus 5 minus 1 2. ये क्वेश्चन कभी कभी 3x3 ऑर्डर का 6 मार्क्स में आता है. अब क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम कुछ नहीं है. क्वेश्चन तो वैसे इजी है, सिंपल कैलकुलेशंस है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं बीच में अगर जरा सा भी प्लस माइनस का कोई मिस्टेक हो गया इन कैलकुलेशन, सपोज यहाँ -1 की जगह मैं कैलकुलेट ठीक नहीं कर पाया और आई राइट 1, तो हमें पता नहीं लगेगा हमसे गलती कहाँ हो गई है. एंड में आगे हम आंसर लिख देंगे ए इनवर्स, बट दैट इज नॉट करेक्ट. तो इसलिए क्या करना, हमको बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग इट. कैलकुलेशन है सिंपल, हर स्टेप पर एक बार कैलकुलेट करें, देन रीचेक इट, उसको रीचेक करते जाएं. अच्छा, अब ये तो रहा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. रो वाइज तो ऐसे चल रहा है हमको. सपोज इट इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में a इक्वल टू a इंटू आई, यहां से शुरुआत करनी है और आगे चलते हुए आई पहुंचना है. r इक्वल टू a इंटू a इनवर्स. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ये रो ट्रांसफॉर्मेशन में बताया मैंने. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पहले ये 1, फिर ये 0 0, देन ये 1, these two 0, then ये 1 और these two 0. These steps are to be followed. रो वाइज ऐसे लेना है, 1 डायगोनल तो लेना ही है दोनों में, लेकिन रो वाइज में पहले ये 1 फिर ये दोनों 0, इसमें पहले ये 1 और ये दोनों 0. Come to the conclusion that is I equal to A into A inverse. तो ये इससे रिलेटेड 3.4 NCERT मार्क की एक्सरसाइज है. सॉल्व 2 और 3 क्वेश्चंस, 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन लें और उसे सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी सॉल्व होगा. और आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की. देन वी विल कम टू द चैप्टर डिटर्मिनेंट. हर चैप्टर आगे मिलता रहे आपको आसानी से, इसलिए बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें. थैंक यू.